Assalamu alaikum and welcome to the second video of your online classes tutorial series. In this video, we'll be looking into the interface of Microsoft Teams, and we've started exactly where we left off in the last video. ये आपका Teams का main page आता है when you have logged in into Microsoft Teams. यहाँ पे आपके पास वो courses display होंगे जो आप register जिनमें हैं. नाउ आई हैव हैड क्वेरीज जहाँ पे बच्चों के पास वो कोर्सेज सारे नहीं आ रहे जिसमें वो रजिस्टर्ड थे. दे आर मिसिंग वन और टू कोर्सेज. Basically, all that is if you've registered slightly late, the academics department give gives the list of names to teachers ताकि वो अपने क्लास में बच्चों को add on कर लें. However, it can take a couple of days for them to do it. So if you're not registered in 2 days, you can contact Student Affairs or the complaint form to ensure कि आप जल्दी enroll हो जाएं. This is your main Teams page, जिसको आप edit कर सकते हैं. You can choose a different theme to this, or you can choose the way how your teams are listed. The list view is basically a one-pane view where all of your teams are shown on the left-hand side and the contents of those teams are shown at the right frame. Personally, I prefer the grid view because it's less cluttered and it's easier to navigate, for me at least. Other than that, you have your activity, which is the most important window. I would recommend all of you to check out the activity page as soon as you log in. Basically, what it has is all of the important notifications similar to your Facebook, जहाँ पे all of the assignments जो आपकी classes में अगर कोई नई assignment post की है वो यहाँ पे आपको mention होगी, कोई नई class schedule हुई है वो यहाँ पे mention होगी, किसी ने आपको कोई message किया है या आपको tag किया है वो यहाँ पे mention होगा. Other than feed, you also have my activity जिसके अंदर आपकी जो activities हैं, आपने कोई submission की हो, कोई class की हो, वो सब यहाँ पे display होंगी. इसके अलावा over here we have chat जिसके अंदर आप chat कर सकते हैं with your colleagues or the faculty member. Also आपकी जो online classes के दरमियान जो discussions या meetings के दरमियान जो discussions होती हैं उसकी chat भी यहाँ पे आपके पास available होंगी. We'll look into the online classes in the future videos, लेकिन यहाँ पे मैं उसमें इसको slightly बताना चाहता हूँ. And then of course you have your teams, जो हमारा पहला जो पेज था landing page, और assignments. ये पेज इज़ अ सिंगल पेन पेज जहाँ पे इस पेज में रहते ही आपके डिफरेंट जो क्लासेस जो कोर्सेज हैं जहाँ पर असाइनमेंट्स आपके हैं वो सारे एक ही जगह पे आपको व्यू हो सकते हैं. आप यहाँ से भी इनको एक्सेस कर सकते हैं और यू कैन गो टू द इंडिविजुअल टीम्स एंड गो टू द असाइनमेंट्स फ्रॉम देयर. We'll look into that in a bit, or but for this video I think this is it, and inshallah in the next video we'll continue from here. Thank you for